about what is it that your diet looks like? My diet actually, मैं बचपन से काफी डिसिप्लिन रही हूँ डाइट के मामले में. I feel like maybe that's come from my parents. Everybody knows my father was an athlete, of course. My mother was in films. तो और हम सबको शौक था to be fit, active. Games खेलते थे हम. I know now today's generation doesn't get an opportunity to play outdoors, but we used to play outdoors after school. And diet के मामले में I've always wanted to eat a balanced diet. तो ऐसा अभी मैं सोचती हूँ carbs, protein, fat. पहले तो हम बस देखते थे कि रोटी, सब्जी, राइस. अभी बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते हैं कि there's a pyramid, you should have a colorful plate, it should have all the colors, and these colors represent certain vitamins and minerals and all of that. So now I understand, and now at this stage in my life, मैं आपको बताना चाहती हूँ, in my 40s, I've understood कि protein कितना important है for muscles, because we lose so much muscle as we get older. And I believe that protein is what helps you with your lean muscle and with muscle recovery, with strength, with immunity, with all these things. So that's why protein has become even more important in my diet. I'm of course a non-vegetarian, so I managed to get it from animal protein, but also there's so many vegetarian sources of protein, and of course that's why we're here today, because of Badam Pe Charcha, is nuts, and Badam is one of the primary sources of vegetarian protein. Lovely. In fact, इतने बड़े कमिटमेंट तो मैंने कर दिए आप लोगों के सामने कि आपका पसंद देश, हमको प्रोटीन ऑप्शनल एंड एवरीथिंग, बट we're fortunate, we have a nutritionist over here. First of all, मैंने डींगे मारे हैं, ये वास्तविकता है. पहले आप वो clarify कर दीजिए. As rightly said, obviously India is a very carb-loving country. In fact, even if you are non-vegetarian, हम शायद हफ्ते में एक ही बार non-veg खाते हैं या अंडा कभी खा लिया. So even if you are non-vegetarian, we are still eating a vegetarian diet. And in fact, after many years, हमारे ICMR, which is the Indian Council of Medical Research, और NIN, which is the National Institute of Nutrition, Hyderabad, जो हमारी सारी guidelines लिखता है diet के बारे में, it has recently revised all its guidelines and specifically come out in 2024, जिसमें ये बताया गया है कि protein deficiency बहुत ही rampant है इंडिया में, and protein is one of the major macronutrients जो कि हमें खास देखना है कि हम अपने डाइट से ले पाए. एंड जनरली टू टेल यू कि हम जैसे लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं हमें कितना लेना चाहिए. सो द रिकमेंडेशन इज 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जो कि अंदाजन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हम सबको चाहिए. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नाउ बीइंग टोल्ड इज कि जहां तक हो सके इसे आप नेचुरल सोर्सेज से लीजिए. So if you can get it from the non-vegetarian sources like अंडा है, non-veg है, but vegetarian, and of course 60 to 70% of the population is vegetarian, तो हमें vegetarian sources से देखना पड़ेगा हमें प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है. So of course दालें हैं, which is very very good source, but nuts and seeds are very good source, जिसमें बादाम is considered to be, in fact उसमें specifically mention भी किया गया है कि बादाम can be one of the very good healthy sources of protein, और जब हम एक मुट्ठी बादाम खाते हैं हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है. So अगर आप natural whole proteins ले सकें अपने डाइट में, तो you should be able to get it from all the vegetarian and the non-vegetarian sources. So that's something which is very interesting and now being documented in our Indian guidelines also. That's really comforting to know. Point of the matter is डब्बे डुबाड़े आहे, but when you have whole available sources at your disposal, why not go with that route? I think it's going to be cheaper also. Okay. Yasmin ji, I just wanted to, given your dedication all these years towards fitness and everything, and since today we are really trying to identify this whole protein gap, I want to understand from you, the pre-workout and post-workout, how important is protein, and what are the things that one can do to kind of optimally work out, or to the best of our advantage? Because right now everybody is all suddenly into the fitness thing, which is a great thing. Where there's either home gyms or we're actually going to studios and everything. So could you share a little bit about that? तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज तो सब लोग करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि व्हाट डू आई ईट बिफोर अ वर्कआउट, व्हाट कैन आई ईट आफ्टर अ वर्कआउट. और नॉर्मली जो लोग खाते थे एक इडली खाते थे या बनाना खाते थे, बट फॉर मी आई लव ईटिंग अ बनाना बिफोर अ वर्कआउट. मगर बनाना के साथ मैं कुछ बादाम भी खाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक जो फ्रूट होता है वो अपनी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो 20 मिनट में वो फ्रूट कहाँ गया पता भी नहीं चलता है. मगर जब हम बादाम खाते हैं कोई भी फ्रूट के साथ, स्पेशली बनाना, एंड मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है,
क्योंकि इतनी आसान है, बनाना कहीं भी मिल सकती है banana. I always have badam with me, so banana and badam, because badam slows down the absorption of banana in your body, so you get energy for longer. So for me that is the best combination. और बहुत टाइम होता है कि I finish my workout, मैं अपनी बात कर रही हूँ, I finish my workout और मेरी next client wait कर रहे होते हैं, and I don't get time to even have a protein shake, you know, because but I'll have a few badam. So for me it's also a great post workout snack, because एक तो बादाम हमें ऐसे महसूस करता है कि हम लोग फुल ज़्यादा टाइम तक रह सके, gives you satiety, and also वो चबाने में you know, I mean a shake is something जो हम डायरेक्टली पी लेते हैं, मगर बादाम वो चबाने में बॉडी को भी सिग्नल्स मिलती है कि खाना आ रहा है, कुछ आ रहा है खाने को, तो डाइजेशन शुरू हो जाती है. So I think for that also, and I love the crunch of badam. So that's my go-to snack. You know, I mean, I have to tell you, इनको Instagram पे स्टॉक करने में ना मेरे को बहुत आत्मा तृप्ति होती है. I will not lie, मैं क्यों झूठ बोलूं. वो ना इतने अच्छे कुछ रेसिपीज शेयर करते हैं. आपने अब तो बादाम एंड बनानास, I'm not a fan of bananas, okay. But I want to know, is there another cool? तो अगर आप मैंगो भी खा रहे हो, उसके साथ कुछ बादाम खा लो, क्योंकि otherwise it's too much sugar. So the badam kind of cuts the sugar, right? I mean, I'm not a nutritionist, but from 30 years of experience of doing things and मेरी खुद की बॉडी पे ट्रायल और एरर के बाद मुझे पता चला है कि जब भी मैं फ्रूट खाती हूँ, मैं थोड़े बादाम खा लेती हूँ फ्रूट के साथ. And it's a very very good idea, because badam, so it's not just protein, it's also the fiber. So badam जब हम खाते हैं, we also know that it has multiple benefits, whether it's a cardiometabolic health, diabetes है, heart है, सबके लिए there are lot of research to document that the almonds are very very healthy. और वो ना सिर्फ प्रोटीन के लिए है, but also the various micronutrients. Of course today we are talking about protein, but also we need to understand that it is very high on fiber. So that's the reason जब भी आप बादाम को किसी फ्रूट के साथ खाते हैं, one it gives you more satiety, और वो डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, आपकी शुगर ज्यादा अच्छी कंट्रोल होती है, आपको एनर्जी ओवर अ सस्टेन पीरियड मिलती है. So there are scientific documentations and of course research to show now कि pre-workout and post-workout almonds actually work very well.